Hi everyone, I am Arpita Sharma, your educator. Welcome to Arpita Sharma classes and I welcome you all to this previous year question paper solving and analyzing session. So we have started from 2016. We are going to solve questions from 2016 till 2020. All the preliminary question paper we are going to solve them in order for you to revise, to know the pattern of UPSC, to analyze what kind of questions and from where the questions are being asked, and to boost up your preparation accordingly. As we are aware that analyzing previous year questions and question papers are the first and foremost thing that you need to do as a UPSC aspirant, because if you do not know what kind of questions can come from the topics that you are learning or revising or understanding, then it becomes very tough to basically give a form to your preparation, right? So in order to structure your preparation in a very efficient manner, first we are going to start with analyzing and solving previous year question papers to understand what is the demand of UPSC and what kind of questions or what kind of tricks you can apply when it comes to solving the prelims questions. Okay, so let's start. शुरू करते हैं आज की क्लास. We are going to solve 20 questions. Each question will be of 2 marks and negative marking is 1/3. ठीक है, जितना भी मार्क्स असाइन किया है इस क्वेश्चन को उसमें से 1/3 डिडक्ट हो जाएगा अगर आपने नेगेटिव यानी कि गलत मार्क किया है आंसर. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. सो इफ अ कैंडिडेट गिव्स मोर देन 1 आंसर इट विल बी ट्रीटेड एज अ रॉन्ग आंसर. अगर आप एक से ज्यादा आंसर देते हो क्वेश्चन का उसको भी हम रॉन्ग आंसर मानेंगे. ठीक है, ये बात याद रखना, भले ही उसमें से एक आंसर सही हो. ठीक है, एंड अगर आप क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ देते हो यानी कि कोई आंसर नहीं देते तो उसमें नो पेनल्टी. ठीक है, अगर आप ब्लैंक छोड़ते हो तो उसमें कोई पेनल्टी नहीं होगी. Point clear? So we have yesterday solved 20 questions. Today we are going to solve the next 20 questions. Starting with question number 21. With reference to Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, consider the following statements. Under this scheme, farmers will have to pay a uniform premium of 2% for any crop they cultivate in any season of the year. This scheme covers post-harvest losses arising out of cyclones and unseasonal rains. Which statement is correct? क्वेश्चन 20 तक हमने सॉल्व किया था, 21 से स्टार्ट कर रहे हैं. इसमें से बताएं कौन सा स्टेटमेंट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से रिलेटेड करेक्ट है. नाउ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर्स. इफ यू आर स्टडिंग PIB वेबसाइट, PIB is Press Information Bureau website, the government media website. On that website there are daily the schemes and programs, yojanas uploaded, all the features are uploaded. So you can refer to PIB when it comes to preparing the current affairs, or even if you have current affair magazines of various renowned institutes, that will also do. न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, करंट अफेयर मैगजीन्स पढ़ रहे हो या फिर PIB वेबसाइट या RSTV वेबसाइट फॉलो करते हो तब भी आप आंसर कर सकते हो. इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, इट्स नॉट अ ट्रिक क्वेश्चन. सिंपल इजी डायरेक्ट क्वेश्चन. Correct answer in this case will be B. Only second statement is correct. First statement is wrong. Okay, first thing is that the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, it's a new crop damage insurance scheme and it was approved in Jan 2016. Now it will replace existing 2 crop insurance schemes, National Agricultural Insurance Scheme and Modified NAIS. Okay, now first thing you have to remember is that here they are saying for any crop 2% uniform premium of 2% the farmers will have to pay. That is wrong. Okay, there are 2 kinds of crops, kharif and rabi crops. Okay, and for kharif crops 2% of the sum insured will be charged, and for rabi crops 1.5% of the sum insured will be charged, and for annual commercial and horticultural crops premium would be 5%. So first statement is wrong. ये extreme statements होती है जिसमें any word आ जाता है ना, ये extreme हो जाती है, तो 99% चांस होता है कि ये गलत हो. ठीक है. Coming on to question number 22. In which of the following regions of India are you most likely to come across Great Indian Hornbill? ये basic question है, क्लास 9th से 12th की अगर आपने ज्योग्राफी NCERTs पढ़ी हैं you can answer it. It's an NCERT based question. तो Great Indian Hornbill अपने natural habitat में कहाँ पाई जाती है? Sand desert of Northwest India, higher Himalayas of J&K, salt marshes of western Gujarat and western Ghats. Now you must have seen, since yesterday we have taken this session, you must have noticed one thing, that direct questions from NCERTs are coming. Class 9 से 12th and Tamil Nadu NCERT books. NCERT जो आपकी CBSE के 9 से 12th और तमिल नाडु की आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री NCERTs. These two NCERTs direct questions are getting formed.
Okay, so here your hint from here is that you have to prepare the NCERTs very diligently for prelims. Correct answer in this case will be, it is D, Western Ghats. Okay, Great Hornbill is also known as Great Indian Hornbill and it is one of the members of the Hornbill family. Basically ये पाई जाती है साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है, बट यहाँ पर इंडिया के रीजन में बात की जा रही है. Here they are asking about the Indian region, so they are also found in Western Ghats and they are near threatened. ये आपको पॉइंट याद रखना, IUCN status is near threatened. Okay. Coming on to question number 23, which of the following are the key features of National Ganga River Basin Authority? Now again, it is the Hindu or the Indian Express related question. ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है, ये न्यूज़पेपर रिलेटेड क्वेश्चन, बिकॉज दीज डिपार्टमेंट्स अथॉरिटीज आर ऑफन मेंशन्ड ऑन पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 इन द न्यूज़पेपर्स, राइट? सो यू हैव टू स्टडी द न्यूज़पेपर्स diligently. Even if any authority or department is mentioned, make sure that you know about it. Okay, तो ये अगेन करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन है. River basin is unit of planning and management. It spearheads the river conservation efforts at national level. One of the chief ministers of states through which Ganga flows becomes the chairman of NGRBA on rotation basis. So now, using the codes given above, please answer the question. जल्दी से बताएं कि question का आंसर क्या होगा. The correct answer to this question will be, the correct answer will be A. Statement 1 and 2 are correct. Third statement is wrong. ठीक है, अब पहली बात तो 2009 में इसको एस्टैब्लिश किया था, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है. एंड it also started the mission Clean Ganga with a changed and comprehensive approach to champion the challenges which is posed to Ganga through 4 different sectors like wastewater management, solid waste management, industrial pollution, riverfront development, etc. Okay, third statement is incorrect. Now the next question, why does the government of India promote use of neem coated urea in agriculture? Release of neem oil in the soil increase nitrogen fixation by soil microorganisms. Neem coating slows down rate of dissolution of urea in the soil. Nitrous oxide, which is a greenhouse gas, is not at all released into atmosphere by crop fields. It's a combination of weedicide and fertilizer for particular crops. Direct question coming from the NCERT. ये question directly NCERT से आ रहा है, ठीक है. अगर आपने क्लास 6 से क्लास 8 तक की साइंस की किताब भी पढ़ी है ना, साइंस की एनसीईआरटी, देन ऑल्सो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. तब भी आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से आंसर कर सकते हो. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टडीड एनसीईआरटीज वेरी डिलिजेंटली. देखते हैं कितने बच्चों ने अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ा है, समझा है. करेक्ट आंसर इन दिस केस इज बी. बी आपका करेक्ट आंसर है. कोटिंग यूरिया विद नीम ऑयल और नीम केक has been proved to be an effective natural alternative to these chemicals. It has been scientifically established that neem oil serves as an effective inhibitor if it is coated on urea. Okay, that you have to remember. Coming on to the next question. Question number 25. Consider the following statements. Chief Secretary in a state is appointed by governor of that state. देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका. ये क्वेश्चन आपका आया है इंडियन पॉलिटी बुक ऑफ एम लक्ष्मीकांत एंड इट हैज बीन टेकन डायरेक्टली फ्रॉम दैट बुक. कहीं से भी ट्विस्टेड क्वेश्चन नहीं है ये. इट इज नॉट अ ट्विस्टेड क्वेश्चन. Chief Secretary in a state is appointed by governor of that state. Chief Secretary in a state has a fixed tenure. Tenure means time period. So here the correct answer is, यहाँ पर correct answer क्या होगा? Very easy question. डायरेक्ट क्वेश्चन एम लक्ष्मीकांत से आया है तो इजी है क्वेश्चन. तो यस, करेक्ट आंसर इज डी. नन ऑफ द अबव इज करेक्ट. चीफ सेक्रेटरी इज चूजन बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट, नॉट गवर्नर. ओके, एंड चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट हैज अ फिक्स्ड टेन्योर. देयर इज नो फिक्स्ड टेन्योर. रॉन्ग. नो फिक्स्ड टेन्योर. ओके, ये बात याद रखनी है. Question number 26, with reference to Stand Up India scheme, which of the following statements is or are correct? Its purpose is to promote entrepreneurship among SC, ST and women entrepreneurs. It provides for refinance through SIDBI. देखो ये माइक्रो इंस्टीट्यूशंस हैं और स्टैंड अप इंडिया स्कीम आपका करंट अफेयर से डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है, न्यूज़पेपर से आया है ये क्वेश्चन डायरेक्टली, कहीं से कोई ट्विस्टेड नहीं है. Okay, it is not a twisted question. So far, only 2 or 3 questions were a little bit twisted. All the questions have been directly asked from newspaper and from NCERTs and from books, right? So you have to analyze in such a manner. आपको इस तरीके से analyze करना है.
So here the correct answer will be, it is C. Both the statements are correct. Pradhan Mantri launched the Stand Up India scheme, which is aimed at providing credit to scheduled caste and scheduled tribes and women borrowers in the non-farm sector. Write it down, in the non-farm sector. जो फार्मिंग के सेक्टर में नहीं है, उन सभी SC ST वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को ये स्कीम के तहत फाइनेंसिंग मिलेगी. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. तो both are correct. Okay, before we move further, there's a small announcement for all of you. आपके लिए एक छोटी सी announcement है. Unacademy has revealed the combo prices. Now you can save big time on the combo subscription. Combo subscription means the GS plus optional subscription if you take. So if this is applied, this offer is applied for 1 year and above subscription. अगर आप 1 year से कम का लेते हो subscription, उस पे ये offer applied नहीं होगा. तो इसमें क्या है, आपका जो भी आप subscription लेते हो 1 साल का या 2 साल का, मान लीजिए for example you have taken 1 year subscription today or in the month of June, it will be naturally valid till the month of June 2022, but it will be extended till your prelims. जब तक prelims नहीं हो जाता आपका subscription valid रहेगा. ठीक है, your subscription will be valid till your prelims. Okay, so you can access all the classes till prelims. And for example, let's say prelims is on 27 June, your subscription will be valid till 27 June 2022. मान लो postpone होता है तो subscription valid रहेगा जब तक prelims नहीं हो जाता. ठीक है, and we are providing total 35% discount, 25% discount on your combo subscription if you take GS plus optional or Iconic GS plus optional, and 10% if you use the referral code ARPITA10. अगर आप ये रेफरल कोड यूज करते हो ना, अर्पिता 10, then you can get 10% extra discount on your plus subscription. Okay, so the links are given below in the description box. New batches have been launched. They are starting from today, that is 2nd June. So hurry up, take your subscription today. मिस मत करना इस ऑफर को, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी वंस इन अ लाइफ टाइम ही आती है. ठीक है, आपके प्रिपरेशन पे इतना ह्यूज डिस्काउंट आपको मिल रहा है, प्लस आप एक्सेस कर सकते हो क्लासेस जब तक आपके प्रीलिम्स नहीं हो जाते. So do not miss this chance. Okay, prices have been reduced now. Anytime they will go back to the original ones. So इसलिए उससे पहले ही आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. Okay, चलो let's move forward. Question number 27 पर आते हैं. The FAO accords the status of globally important agricultural heritage system to traditional agricultural systems. What is the overall goal of the initiative? FAO Accords का जो globally important agriculture heritage system है, इसका goal क्या है इस initiative का? To provide modern technology training in modern farming methods and financial support to local communities of identified GIAHS so as to greatly enhance their agricultural productivity, to identify and safeguard eco-friendly traditional farm practices and their associated landscapes, agricultural biodiversity, knowledge systems of local communities, to provide geographical indication status to all the varieties of agricultural produce in such identified GIAHS. आपको बताना है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, which one of them is the correct statement. Here you have the options. जल्दी से बताएं. You have 10 seconds time to answer the question. इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आप लोगों के पास है 10 seconds का टाइम. जल्दी से बताएं which option is correct. So the correct answer in this case will be, it will be B. B is the correct answer. Second statement is absolutely correct. अच्छा, ये पॉइंट याद रखना है that the GIAHS sites in India, इंडिया में जो sites हैं वो कौन कौन सी हैं? Which are the sites in India? This is a direct current affair based question. Okay, so we have Koraput, which is in Odisha, and we have Kutanad. Okay, these are the two sites of GIAHS in India. The sites are chosen keeping in mind the provision of local food security, store of indigenous knowledge, high level of agricultural biodiversity. Okay. Next question, which of the following is or are tributary of tributaries of Brahmaputra? Very easy question. ये question 2017 से ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर पूछा जा रहा है. ठीक है, 2017 से कॉन्टिन्यूसली पूछा जा रहा है, तो 2016 क्वेश्चन है, 17 से उसको कॉन्टिन्यूस बना दिया गया. तो यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर अ लॉट. Dibang, Kameng or Lohit? Select the correct answer using the code given below. Easily answerable question if you have studied NCERT class 11th to class 12th geography. Okay, direct question है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है. Correct answer in this case will be, correct answer यहाँ पर क्या होगा? It is D. ठीक है, D is the correct answer.
ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है ये तिब्बत, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश में पाया जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। Coming on to the next question. So we are talking about the core banking solutions over here in the question. The term core banking solutions is sometimes seen in the news. Which of the following statements best describes or describe this term? It's a networking of a bank's branches which enables customers to operate their accounts from any branch of bank on its network regardless of where they open their accounts. It's an effort to increase RBI's control over commercial banks through computerization. It's a detailed procedure by which a bank with huge non-performing asset is taken over by another bank. So you have to select the correct answer using the codes given below. So here you have 10 seconds time to answer the question. आप लोगों के पास 10 सेकंड का टाइम है क्वेश्चन को आंसर करने का. करेक्ट आंसर इन दिस केस विल बी, इस केस में करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ. वी आर टॉकिंग अबाउट द कोर बैंकिंग सोल्यूशन. करेक्ट आंसर विल बी ए. ओनली स्टेटमेंट 1 is correct. थर्ड स्टेटमेंट is automatically incorrect. Detailed procedure by which a bank with huge non-performing assets is taken over by another bank, that is wrong. It's not about core banking solution. Core banking solution is a banking service. यहाँ पर लिख सकते हो. It's a banking service. Okay, so it is provided by group of the networked branch, the network back branches, जहाँ पर कस्टमर्स अपने बैंक अकाउंट को या अपने देख सकते हैं, या बेसिक जो ट्रांजैक्शंस होती है इधर से उधर पैसे ट्रांसफर करना या पैसे निकालना, राइट, वो किसी भी मेंबर ब्रांच ऑफिस के साथ कर सकते हैं. ठीक है. एंड कोर बैंकिंग ना बेसिकली रिटेल बैंकिंग के साथ जुड़ी होती है. ठीक है. तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. ए इज द करेक्ट आंसर. Coming on to the next question, consider the following pairs. We have given you terms which are seen in news and the origin of these terms. कहाँ से ये terms आई, बनी, ठीक है, originate हुई. तो first is Annex 1 countries, Cartagena Protocol. Second is Certified Emission Reduction, Nagoya Protocol. Third is Clean Development Mechanism, Kyoto Protocol. Which of the pairs given above is or are correctly matched? ये terms कहाँ से originate हुई है, आपको correctly इसको match करना है. So you have again 10 seconds time to answer the question. आप लोगों के पास 10 सेकंड का टाइम है इस क्वेश्चन को आंसर करने का. करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यू हैव टू अंडरस्टैंड फुली कि ये नगोया और क्योटो प्रोटोकॉल है, ये आपको पढ़ने. ऐसे ही पेरिस अग्रीमेंट जो है वो भी आपको पढ़ना है. ये अग्रीमेंट जो पास्ट में साइन हुए हैं इनको ध्यान से पढ़ना है कि ओरिजिनेट कब हुए, कौन से ईयर में हुए, इनका एम क्या है, और इनके कॉम्पोजिशंस के बारे में पढ़ना है आपको, इनके टारगेट्स के बारे में पढ़ना है. ठीक है. करेक्ट आंसर इज, इट इज सी. थर्ड इज करेक्ट. ओके, फर्स्ट एंड सेकंड आर रॉन्ग. क्लीन डेवलपमेंट मिशन, इसको आर्टिकल 12 क्योटो प्रोटोकॉल के आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है, समझाया गया है. ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है आपको. Question number 31. In the context of developments in bioinformatics, the term transcriptome sometimes seen in news. Direct question taken from current affairs. It refers to range of enzymes used in genome editing, full range of mRNA molecules expressed by an organism, the description of mechanism of gene expression, mechanism of genetic mutations taking place in the cells. Now ये direct current affair based question है. Current affair magazines if you are studying, then you can answer this question very easily. Correct answer to this question is, इस question का आपका correct answer होगा, it is B. The full range of mRNA molecules expressed by an organism, that is your the term meaning of transcriptome. Okay. Question number 32. Again direct question taken from current affairs. Mission Indradhanush launched by Government of India pertains to immunization of children and pregnant women, construction of smart cities across country, India's own search for Earth-like planets in outer space, new education policy. जल्दी से बताएं. मिशन इंद्रधनुष. नाउ हियर यू कैन यूज योर इंटेलिजेंट गेस ऑल्सो. यहाँ पर आप थोड़ा सा अपना इंटेलिजेंट गेस भी यूज कर सकते हो. स्मार्ट सिटी से रिलेटेड हमारे पास काफी स्कीम्स हैं, तो बी को आप एलिमिनेट कर सकते हो. यहाँ पर इंडियाज ओन सर्च फॉर अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन आउटर स्पेस, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो. न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, नो. करेक्ट आंसर इज ए, इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन.
Question number 33. Which of the following best describes or describe the aim of Green India Mission? Again, current affair based question. Incorporating environmental benefits and cost into union and state budgets, thereby implementing green accounting. Launching second green revolution to enhance agricultural output so as to ensure food security to one and all in the future. Restoring and enhancing forest cover and responding to climate change by combination of adaptation and mitigation measures. Which statement is correct regarding the Green India Mission? Correct answer in this case is, it is C. Third statement is correct. First and second statements are wrong. पहली बात तो नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया जो है ये इट इज वन ऑफ द 8 मिशंस व्हिच इज आउटलाइंड अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. ओके, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. Next question. With reference to pre-packaged items in India, it is mandatory to manufacturer to put which of the following information on main label as per the food safety and the standards packaging and labeling regulations of 2011. List of ingredients including additives. अब ये तो आपको पता ही है. This is common sense. General science question है ये आपका. ठीक है. This is about awareness. This is to check your awareness. First is list of ingredients including additives, nutrition information, recommendations if any made by medical profession about the possibility of any allergic reactions, vegetarian or non-vegetarian items which are present in the food. So correct answer in this case will be, इस case में आपका correct answer रहेगा. You have 10 seconds time to answer the question. 10 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास. करेक्ट आंसर ओवर हियर इज सी. 1, 2 and 4. रिकमेंडेशंस जो है एलर्जिक रिएक्शंस होंगे कि नहीं होंगे ये यहाँ पर मेंशन नहीं होता है. ये पॉइंट आपको याद रखना है. यस, एक्सपायरी डेट इज मेंशन्ड, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट इज मेंशन्ड, और यू कैन से रिकमेंडेड लास्ट कंजम्पशन डेट इज मेंशन्ड. ओके, थर्ड इज इनकरेक्ट. Question number 35. Project Loon sometimes seen in news. Again, current affair based question. It is related to waste management technology, wireless communication technology, solar power production technology और the water conservation technology. जल्दी से बताएं. Project Loon. Correct answer in this case will be, इस केस में correct answer होगा आपका, इट इज बी, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. प्रोजेक्ट लून जो है वो एक रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसको गूगल एक्स इसको डिजाइन कर रहा है. इसका मिशन है कि अक्रॉस टू द रूरल एंड रिमोट एरियाज इंटरनेट अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी को किया जा सके, प्रेजेंट किया जा सके, दिया जा सके. ठीक है. Question number 36, again direct current affair based question. The net metering is sometimes seen in the news in the context of promoting the production and use of solar energy by households or consumers, use of piped natural gas in kitchens of households, installation of CNG kits in motor cars, installation of water meters in urban households. जल्दी से बताएं. बात की जा रही है इसमें नेट मीटरिंग की. Correct answer in this case will be, it is A. A is the correct answer. Net metering जो है that allows residential and commercial customers who generate their own electricity from solar power to feed electricity that they do not use back into the grid. जो इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर रहे हैं उसको वापस ग्रिड में भेज दिया जाता है. So basically it's a billing mechanism that credits the solar energy system owners for the electricity they add to the grid. Okay, rest of the electricity which is unused is sent back to the grid. Going on to the question number 37, again current affair based questions हैं. जितनी भी reports और indices आप पढ़ते हो आपको याद रखना है कौन इनको issue करता है. India's ranking in ease of doing business index is sometimes seen in the news. Which of the following has declared that ranking? Ease of doing business index कौन declare करता है इसको? Is it Organization for Economic Cooperation and Development, or is it World Economic Forum, or is it World Bank, or the World Trade Organization? You have exactly 10 seconds time to answer the question. So the correct answer in this case will be, it is C, World Bank.
World Bank is the correct answer. So it is annually released. Ease of doing business index. It is annually released. Basically ये पैरामीटर बताता है कि कौन कौन से पैरामीटर्स में हम कंट्री को टेस्ट करते हैं, और लिस्टिंग बताता है किन कंट्रीज में बिजनेस करने का जो प्रोसीजर है वो इजी है, जो कह सकते हो आप, जो ईज प्रोवाइड करता है बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर्स को. क्वेश्चन नंबर 38. Banjaras during the medieval period of Indian history were generally एग्रीकल्चरिस्ट, वॉरियर्स, वीवर्स, ट्रेडर्स. ये बहुत इजी डायरेक्ट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी से आया है. छोटे से बॉक्स होते हैं ना एनसीईआरटी में जो बने होते हैं, उसी में से ये क्वेश्चन पिकअप किया गया है. करेक्ट आंसर इन दिस केस इज, इट इज डी, ट्रेडर्स. ओके, ये आपको याद रखना है. इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन. Question number 39. Which of the following had first deciphered the edicts of Emperor Ashoka? Again, a very easy question, direct question taken from NCERT class 11, 12th, Ancient Indian History. Right? तो इसमें एम्परर अशोका के एडिक्ट्स को किसने डिसाइफर, उसको किसने डिकोड किया था? जॉर्ज बुलर, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मुलर और विलियम जोन्स. अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है. आंसर है बी, जेम्स प्रिंसेप. ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है. Last question for today, question 40. With reference to Gram Nyalay Act, which of the following statements is or are correct? Again, ये हो गया आपका इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन एंड टेकन फ्रॉम करंट अफेयर्स प्लस एम लक्ष्मीकांत की जो किताब है. ओके, सो ग्राम न्यायालय एक्ट के रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं जो आपको बताने हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें. So first statement is, as per the act, Gram Nyayalayas can hear only civil cases and not criminal cases. Again ये extreme statement हो जाता है, but still extreme statements can be 1% correct also, but 99% incorrect होते हैं. Act allows local social activists as mediators or reconciliators. Select the correct answer using the code given below. Is it 1, 2, both or none of the above? Again you have 10 seconds time to answer the question. Correct answer to this question will be, it is B. Statement 1 is wrong. I told you extreme case हो जाता है. It can hear both criminal and civil cases, and appeals in civil cases will have to be disposed of in 6 months. Okay? तो अगर सिविल केसेस है तो उसकी अपील 6 महीने में क्लोज करनी होती है, क्लोजर देना होता है केस को. So these were the questions, next 20 questions that we solved today. ये आपके next 20 questions थे जो आज हमने solve किए हैं. I hope you enjoyed the class. Make sure that you let me know your scores in the comment section. मुझे अपने scores comment section में जरूर बताइएगा. ठीक है? So the next set of 20 questions we'll be solving them in the next class. This was part 2 of today's lecture.